Good morning, student. Here I am discussing your chapter number 5. Already I have explained to you, and our practical work was left. So that today I am discussing here your practical work. Okay. First of all, you have to know what is the MS Excel. This is your MS Excel window. Here so many things are given. First is your ribbon. This is the whole is showing like ribbon. Here is your this is your working area where you can entering the data and manipulate them. This is your formula bar also. So I first of all I want to tell you what is the Excel purpose. It is a very popular spreadsheet program. It allows you to create and maintain the data in tabular format. Tabular format means this is a table like format structure. Like here's rows and columns as well. And you can say Excel is commonly used for storing, स्ट्रक्चरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज. बेसिकली हम यहाँ पे जो वर्क करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज पर ही करते हैं और वी कैन सी द अकाउंटिंग पर्पज वी कैन यूज दिस थिंग. ओके, एंड इट इज मेनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन to keep records of employees, to create salary and some other operations. Okay, and the features of Excel is allows to create worksheet much like paper, ledgers that can perform ऑटोमेटिक कैलकुलेशन. हम इस किस लिए यूज़ करते हैं? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इसमें हो जाती है. अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी वो कैसे होती है. सी, क्विक डेटा एंट्री कैन इजीली बी डन यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन. यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इस तरह के दिए गए हैं जिनसे आप इजीली और क्विकली आप डेटा को एंटर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो कैलकुलेट ऑल्सो. Data can be viewed in graphical form such as charts also. Okay, and first of all you have to know how we can start the Excel. As we have already discussed our MS Word, same we have to written here MS Excel on the search bar, and this window will be opened. After that, what you have to know, the Microsoft interface. Interface means when the user can interact to the software. जिस विंडो के थ्रू, जिस फीचर्स के थ्रू यूजर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है, इट्स कॉल्ड द इंटरफेस. ऑन ओपनिंग एक्सेल एप्लीकेशन बैकस्टेज व्यू अपीयर्स. ये जो आपको व्यू अपीयर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रीसेट टेम्पलेट्स. ये आपके पहले से डिजाइनिंग टेम्पलेट्स हैं. एंड ऑन क्लिकिंग ब्लैंक वर्कबुक, हमने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया. सपोज यू वांट टू ओपन द ब्लैंक वर्कबुक हियर, you have to click on first of all file option and new option. Blank workbook is here written and you have to click on create. So here is your new workbook will be created. This is called main interface of Excel. It consists of various elements. Okay, now I am telling you how many elements and which type of elements here is shown. First of all, here is called quick access toolbar. This is called quick access toolbar. इसके अंदर जो भी आपके टैब्स होते हैं वो वाले टैब्स होते हैं जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हो और आप डायरेक्टली उनको यहाँ से पिक कर सकते हो. मतलब आपको किसी टैब के अंदर, ग्रुप के अंदर जाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इनको यहीं से सर्च कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज यू हैव these all are called tabs. File, home, insert, page layout, formulas, these all are tabs. This is called title bar. This is window control button. Here is your ribbon. रिबन के अंदर आपके सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं. दिस इज कॉल्ड रिबन. हियर इज फॉर्मूला बार. यहाँ आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं. आप अपने सेल के अंदर भी लिख सकते हैं बट यहाँ भी लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार. इट इज योर नेम बॉक्स, जहाँ पे आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे. सपोज आई एम क्लिकिंग ओवर देयर, दिस इज आई column and 12th row. So here is written I12 means the name box which is the active cell. Here is shown. These all are columns and these all are rows, and this is your active cell here which is dark borders, and this is called pointer. जहाँ पे प्लस साइन आता है, it is called pointer. This is sheet tab. Sheet means कौन सी आपने शीट्स को ओपन किया. आपको ये तो पता ही होगा कि कितनी शीट्स हम कितनी भी शीट्स अपने वर्कबुक के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं. वी कैन आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओवर देयर वी कैन ऐड सो मेनी शीट्स ओवर देयर. एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार. स्टेटस क्या है आपका? रेडी. दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार. हियर इज योर जूम कंट्रोल बटन. आप इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इजीली कर सकते हैं. जूम कंट्रोल बटन. हियर इज योर स्क्रॉल बार.
and worksheet view buttons is here. Okay, so this is your all Excel window parts. And we can say also components. Like components means how we can use these type of features. This is your file tab, file button, where क्या क्या यहाँ पे है आपके पास, save as, zip, open, close, info, recent, new, print, save and send, and last one options and exit. Okay, so you can go easily. And title bar, as we discussed, quick access toolbar, window control button, these are given in your book also. टैब्स एंड रिबन्स, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, वर्कबुक. वर्कबुक मीन्स जिसके अंदर सारी शीट्स अवेलेबल है. दिस इज वन वर्कबुक हेयर and here so many sheets are available which you can do the work. Okay, and worksheet or spreadsheet, rows, these are rows, and columns, cell means each type of rows and columns. The combination of cells is called columns and rows. Okay, active cell, where I clicked स्क्रॉल बार, शीट टैब, व्यू बटन्स मीन्स आप उसको नॉर्मली शो करना चाहते हो या फिर आप किसी उसको पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना चाहते हो. दिस इज कॉल्ड व्यू बटन्स. जूम कंट्रोल, एज वी डिस्कस हियर. माउस पॉइंटर, जहाँ पे हम अपना माउस को लेके जा रहे हैं. This is all the type of working of your MS Excel. So by the help of these types of tabs and features, we can use for entering the data in our tabular format, like rows and columns, and we can easily use the calculations also by the help of this particular cell. And entering the data here, after that applying the auto sum feature also over there. These features are very helpful to calculating the values in particular order. Also we can arrange in sorting, filtering also. So this type of work we can do easily in a MS Excel. So we can say MS Excel is very useful for us. After doing the work of MS Excel, it is easy and as well as more easy and quickly we can do the work, as well as you're very clearly, and it is 100% correct, give the result correct. So we can say we can easily believe on this software. Okay, this is basically used for your accounting purpose, where we want to add the salaries, or we can say in school also when we want to calculate the marks of a student, and each records we have to maintain in our management system or for storing the database. This type of work we can easily do by this software. So formulas we can say use from here, data also, review tab, from review tab so many features are given, like spelling also we can check, research, thesaurus. These all are used for viewing the data or changing the data. In a view tab we have so many types of groups available, like workbook views, show, zoom and window, macros, home, insert. There are so many things are given. In insert tab we have a charts option also. If we want to enter the records, after that according to the record we can make the charts, like column, line, pie. These all are we can discuss in our next class. Next means your 7th standard. This is so up level, and till now you have to know only the components, features, and some features also you can apply by the help of, like entering the records, opening the records, how to print the records, and saving, editing also you can have to learn by the help of this software. So in next class we will discuss like entering the records, editing records, and save, open as well. Thank you so much. Left part we will discuss in our next class. Thank you.